Assalamualaikum YouTube nabs. As we all know, the 2020 is ending, so मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मैं टॉप 5 बुक्स करूँ. मैंने इसी साल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं and I have read not a lot of but some books, and I want to share some of the books that I really found like helpful for me. So the number fifth, we will go from fifth to one. So the number fifth is The Sun and Her Flowers by Rupi Kaur. है तो ये poetry पे book, but it's all about the woman, how she thinks and how she fantasizes. Like it's kind of a sexualized, but it also a very good book to understand the psyche of the woman. Because we know कि यार हमारी सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स का एक करेक्टर हम जो एक एज अ बॉयज समझते हैं वो, और जो लड़की सोचती है और जो उनके हार्डशिप्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं. सो आई रियली लाइक it helped me to connect with the women's, like how they think and how they react to certain situations. So it's a very good book, and it's also very good poetry if you are in the poetry. And the number 4 book is Shoe Dog by Finlight. अब ये एक ऑटोबायोग्राफी है फिनलाइट की. इट्स लाइक हाउ द नाइकी स्टार्टेड एंड इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, एंड इट लाइक tells you कि how travel helps to explore your mind, and कैसे उन्होंने किन हालात से अगर कैसे अनएक्सपेक्टेड एक नाइकी कंपनी एट द एंड बनी. ठीक है. And the third book is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Okay, some people say that this book is overrated, but I say no, it's properly rated, because this book gives a lot of different perspective of how you see the world. आप इस बुक में like one thing that I will tell you is that जब भाई आप ये बुक का हर एक चैप्टर फॉर डिफरेंट है, लेकिन जब आप चैप्टर एक पढ़ते हो ना, एट द स्टार्ट लाइक फ्रॉम द स्टार्ट टू मिडल, आप कहते हैं ये बंदा क्या कह रहा है, ये पागल है, लाइक यू लेबल दिस मैन एज अ मैड पर्सन. बट जब लास्ट सेकेंड हाफ आता है ना, यू स्टार्ट टू एग्री विद हिम कि व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट इज. ये आपके दिमाग को भी घुमा लेता है. इट्स लाइक माइंड बॉगलिंग थिंग, बट इट्स नॉट दैट हार्ड, एंड इट विल गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड, हाउ यू विल सी. लाइक इट्स नॉट अ क्लीशे. ठीक है ना. एक क्लीशे चीज़ें हमारे पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, बट इट विल गिव यू अ होल न्यू level perspective. Okay, let's get to the second book, which is Atomic Habits by James Clear. Okay, I forgot the author's name. So yeah. So अब ये book you have been like आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार ये book बहुत अच्छी है. ठीक है ना. And really it is very good book, because it will like tell you how the habits are made and how the habits are constructed. And the thing that fascinates me is that if you like just improve 1% or like 0.1%, but over time in a year or so you will improve drastically. It's a good thing like not to improve 10% a day and then like for a whole year doesn't improve. It's better to improve 1% or maybe less than 1%, but it is very good to improve. And just how you improve 1% a day, you can also decrease that. आप अपने आप को ख़राब भी कर सकते हो. तो like 1%, like little bit you get bored of things which I struggle a lot. आप करते हो तो you will like किस pitfall में गिर जाओगे. So yeah, it's a very good book. And the number 1 book that I really like. But before that, let me give you some honorable mentions. So the honorable mentions are The Secret by Rhonda Byrne, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murray, and Hyper Focus by Chris Bailey. आपने बहुत सुना कि मैंने इस बुक के बाद बहुत brag किया. ठीक है ना. Because it really kinda like changed my life at some point. But the thing is, I'm not mentioning in the top 5 books because मैं काफ़ी भूल चुका हूँ काफ़ी हद तक. ठीक है ना. So I'm rereading it, and this time I'm like taking conscious effort कि यार भूलूँ ना. But at some point it like helped me a lot, and it changed my life. Like जैसे मुझे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, लाइक आई यूज सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई रियली लाइक, जो मैं अब तक भूला नहीं हूँ तो मैं वो भी यूज़ करता हूँ. बट इट्स अ वेरी गुड बुक इफ़ यू वांट टू रीड. एंड आई विल से कि इन दोनों बुक्स में से कोई एक भी पढ़ लो ना, इट्स जस्ट सेम. ठीक है ना. ओके, सो द फर्स्ट नंबर 1 book that I really liked, it's an Islamic book. So some of you guys, it's not for you, but I will say even if you are non-Muslim, just read it. Revive Your Heart by Numan Ali Khan. Okay,
ये बुक ने मुझे उन दिनों में बहुत हेल्प दिया है जिन दिनों में मैं बहुत ही अपने लाइक आई विल was far away from my religion. And the thing that like fascinates about me about this book is that कि यार इतनी आसान लैंग्वेज में इतनी आसान बातों में उसने चीज़ें समझाई है ना, लाइक कनेक्टिंग विद द टुडेज वर्ल्ड. यू विल लाइक से कि हमारे मसला ये होता है कि हम जिन लोगों को स्कॉलर्स को मोस्टली सुनते हैं जो हमारे सोसाइटी में, एज आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सुनते हैं, दे आर नॉट कनेक्टिंग इट विद द टुडेज वर्ल्ड, दे आर जस्ट लाइक ब्रैगिंग ओल्ड स्टफ. बट द रिलीजन नीड्स टू बी फ्रेश एवरी टाइम. ठीक है ना, रिलीजन ऐसा बना हुआ है हमारा, लेकिन उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं की. सो दैट्स वाई दिस बुक लाइक देयर इज अ सूरतुल असर ओनली 3 आयats. And as I like अगर आपको तर्जुमा पढ़ोगे it's just straightforward, but in many chapters he just used those 3 verses and again and again and again. And like it's a really really good book. I will say कि if you are Muslim then definitely read this because it will help you to understand Quran and it will help you to understand your daily chores and daily work. ठीक है ना, very good. But if you are also non-Muslim, just check it out and maybe you will like it. Maybe you will get something to sort out your own life. And these are my books and inshallah I hope कि मैं अगले साल इससे भी ज़्यादा books पढूं and like I want to read a lot of books next year, and that's why I have like those books, and there's also a bookshelf like covered with books and some books are here and there. So yeah, I really want to read a lot of books next year. So I hope you liked it, and this is as our 2020 is ending, so we should aim to read more books because it will open our minds. Yeah. So till next video, Allah Hafiz.